हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, बच्चे क्या बड़े भी वो लोग नहीं जानते हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। उससे पहले हम ये सब जान लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है एंड लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन अगर 2/5, लेट्स टेक एन एग्जांपल 2/5, यहीं पे यू कैन सी दैट द न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर, राइट। यहाँ पे क्या है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। इस प्रकार को फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, राइट। 2/5, 3/6, 4/7, 128/165, these are the प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके ठीक उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल 5/3, देन 8/6, then 11/2, these are the improper fraction। क्या है improper fraction में, here you can see that the numerator is greater than the denominator। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, improper fraction। ठीक है, improper fraction। एंड जिस प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेट्स टेक सम एग्जांपल 2 होल 3/5। यहीं पे एक होल पार्ट होता है एंड along with the proper fraction, एक होल पार्ट है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अनदर एग्जांपल 6 होल 2/9, ओके, 1 होल 1/2, 7 होल 2/3, these are the mixed fraction। ओके, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इम्प्रॉपर ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको हम जानेंगे अभी। ये पे देखो 2 होल 3/5 है ना, तो हम क्या करेंगे, ये होल पार्ट को ये डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा न्यूमरेटर के साथ उसका प्लस करेंगे। ठीक है, तो वही भी वो जो डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा डिनोमिनेटर, देन 5 × 2, ओके, डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन विद द होल पार्ट प्लस 3, 5 2 is 10 plus 3/5, okay, that is 13/5. 6 whole 2/9, 6 whole 2/9. How to do it, how to make it a improper fraction. This is a mixed fraction, how to convert it into a mixed fraction, sorry, improper fraction। तो हम क्या करेंगे, वही 9 रहेगा, जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा डिनोमिनेटर, 9 × 6 प्लस न्यूमरेटर, 9 6 are 54 प्लस 2/9, ओके, दिस इज 56/9। ओके, तो फ्रेंड्स हम जान लिए अभी हाउ टू कन्वर्ट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। हम अभी क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट ए
mixed fraction, sorry, improper fraction into mixed fraction. Let's take some examples. 21/5, ठीक है ना. How to convert it into a mixed fraction? Okay, first of all what to do, 21 इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना. ओके, 5 4 ज़ा 20. ओके, देन द रिमाइंडर इज 1, राइट. सो वही रहेगा, वो जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर रहेगा. दिस इज द होल पार्ट, राइट 4 हियर एंड 1. This is the remainder we have to write as its numerator. Okay, then take another example. 9/4. Okay, 9/4. How to convert it into a mixed fraction? First of all we have to divide 9/4. 4 to the 8. The remainder is 1 here. So this is the whole part, as I said before. 2 whole 1 by denominator वही सेम रहेगा, ठीक है ना. This is how we convert an improper fraction into a mixed fraction, right? Now like fraction क्या होता है? What is like fraction? Like fraction होता है बच्चों, क्या है? What is like fraction? Like fraction is a fraction which have same denominator, right? 6/7, 2/7, 3/7, 11/7. These are like fractions. Since the denominator here, you can see all the denominators here are 7, hence it is called a like fraction. These are the like fractions. Okay, what is unlike fraction? Unlike fraction क्या होता है? 2/5, 7/11, 3/4. These are the unlike fraction. Mean जिसका डिनोमिनेटर क्या सेम नहीं होता है, उस प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना. अच्छा तो बच्चों अभी क्या करेंगे? लेट अस सी हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस. ओके, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. पहले हम जान लेते हैं लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है. सो पहले हम क्या करेंगे? 2/7. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 2/7 प्लस 3/7. ओके, you can see here that the denominator are the same, hence these are like fractions. Okay, so write the same denominator here and write 2 plus 3 is equal to 5/7 is the answer. Okay, now 8/11 plus 3/11 plus 1/11. Okay, how to do it? Write the same denominator here and the numerator 8 plus 3 plus 1. Okay, 8 plus 3 is equal to 11 plus 1 is equal to 12. 12/11, right? This is the addition, right? And you can see here it is an improper fraction. We can convert a mixed an improper fraction to a mixed fraction. Okay, 12 divided by 11, 11 1 ja 11, 1, so it is 1 whole 1/11. This is the whole part. Okay, now how to subtract the like fractions? How to subtract
the like fractions. 7 by 11 minus 2 by 11. Okay, here the denominator will be the same, right? Write 7 here minus 2. 7 minus 2 is equal to 5 by 11. So friends, it is very easy to subtract and add like fractions, right? Then take another example, 25 by 72 minus 4 by 72. Now write 72 as the denominator, 25 minus 4, it is 21 by 72. Okay, now you can see it is 21 by 72, right? अभी हम क्या करेंगे, अभी हम प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे. Now let us learn how to add the proper fractions. Let's take example 2 by 14 plus 1 by 28. Okay, let's take 21. How to add this? First of all, we have to take the LCM of 14 and 21. Remember, the LCM of 14 and 21. Okay, 7 2s are 14, 7 3s are 21. Okay, the LCM of 14 and 21 is 7 into 2 into 3, 7 into 2 into 3. 6 7 are 42. Okay, now write 42 here. Then we have to divide 42 by 14. 42 divided by 14. 14 3s are 42. Okay, now write 2 here, and what we get after division, it is 3. Write 2 into 3 plus the प्लस साइन here. Then 42 को हम 21 से डिवाइड करेंगे अभी, ठीक है ना? 42 डिवाइड बाय डिविजिबल डिवाइड बाय 21. 21 2s are 42. Okay, now write 1 into the quotient. Now अभी क्या हो जाएगा, 2 into 3, 2 3s are 6 plus 1 into 2 is equal to 2, and this is 42. 6 plus 2 is equal to 8 by 42. This is the answer. Okay, we can also convert it into lowest form. How to do it? How to convert it into the lowest form? We have to take the HCF of 8 and 42. Remember, to make it into lowest form, we have to take the HCF of the numerator and denominator. 8 and 42 का वो जो क्या है, HCF क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो HCF क्या है, here HCF is 2, right? We can make it into lowest form by 8 divided by 2 as well as 42 divided by 2. It is 4 by 21. This is the answer. Okay, this is the addition of proper fraction, right? This is the addition of proper fraction. Then let's see how to subtract it. Fraction of proper fraction. हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एन एग्जांपल 5 by
7 माइनस 3/5, ठीक है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एज आई सेड बिफोर, वी हैव टू टेक दी व्हाट, दी LCM ऑफ दिस डिनोमिनेटर्स, राइट। 7 एंड 5 का LCM क्या होगा, 7 1 5 5 1 1, 7 into 5, right, 35 is the LCM, right. Now what to do, 35 that must be divided by 7, right. 5, this 5 into, after division 35 divide by 7, 5 is 35, we got how much, 5, right. 5 here, put the minus sign, then again we have to divide 35 divide by 5, 5 7 ja 35, okay. Now we got, write 3 here, 3 and the quotient 3 into 7, sorry 7, 5 5 ja 25, 7 3 ja 21 by 35. 25 minus 21 is equal to 4, right. 4 by 35 is the answer. You know how to add and subtract. This is one method, and we have another method how to subtract. First of all, in the second method, we have to take the LCM of the denominators. Here denominator is 5 and it has 7 and it has 5 as denominators. Okay, let's take it its LCM. We will get 7 into 5 is equal to 35, right. So first of all, what we have to do, we have to make these two fractions into like fractions, okay. 5 by 7, 7 into how much is equal to 35, 7 into how much is equal to 35, 7 into 5, 7 5 are 35. We have to again multiply the same number here and here, okay. 5 5 are 25, then 7 5 are 35. Now 3 by 5, right. 5 into how much is equal to 35, 5 into 7 is equal to 35, okay. Since we have multiplied 7 with this, we have to multiply 7 with the numerator also. 7 3 are 21 by 5 7 are 35. Now we can subtract 25 by 35 minus 21 by 35, right. 35 25 minus 21 is equal to 4 by 35. This is the answer, okay. It is correct as I did before. This is the same as I did before, okay. Now let us see how to add and subtract with the mixed fraction. 2 whole 1 by 5 plus 3 whole 1 by 10. Let us do this addition, okay. Here 5 2s are 10 plus 1, 11 by 5 plus 10 3s are 30, 30 plus 1 35, 30 plus 1 31 by 10, okay. Now as we did before, we have to take the LCM of these denominators. 5 and 10 का LCM क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. So इसका क्या आ जाएगा, LCM is 10. 5 into 1 into 2 is equal to 10, right. Write 10 here. उसके बाद हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा. 10 को हम 5
क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. 10 divided by 5, 5 2 is 10, and we got the remainder 0 here. 11 into the quotient 2 plus, write the plus sign here. 10 divided by 10 is equal to 1. Okay, 31 into 1. 11 into 2 is equal to 22 plus 31 into 1 is equal to 31 by 10, right? This is 1 plus 2 is equal to 3, 53 by 10. Okay, 53 by 10. This is an improper fraction. We have to change it into mixed fraction. 53 divided by 10, 10 5s are 50. The remainder is 3 here. Hence 5 whole, this is the whole part, 5 whole, 3 by 10 is the answer. Okay, now let us see how to subtract. How to subtract a mixed fraction, right? 5 whole 1 by 6 minus 2 whole 1 by 4. First of all, as I said, we have to convert it into improper fraction. 6 5s are 30 plus 1 30. 6 5s are 30 plus 1 31 by 6 minus 4 2s are 8 plus 1 9 by 4. Then we have to take the LCM of 6 and 4. 6 4, इसका LCM क्या होगा, 2 3s are 6, 2 4 2 2s are 4. Okay, LCM 2 into 3 into 2 is 12, right? तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दो ही तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. देखते हैं लाइक फ्रैक्शन करने के बाद क्या होता है. 31 by 6. 6 into how much is equal to 12, right? 31 here. 6 into 2 is equal to 12. We have to also multiply 2 with the numerator. 3 1s are 2 1s are 2, 2 3s are 6, 62 by 12 and 9 by 4. Okay, 4 into how much is equal to 12. 4 3s are 12. Now we have to multiply with the numerator as well as with the denominator the same number. 4 2s are 4 3s are 12, 9 3s are 27. Now we can subtract it. 62 by 12 minus 27 by 12 is equal to 12. 62 minus 27, ठीक है ना. 12 minus 7 is equal to 5. 5 minus 2 is equal to 3. 35 by 12. Again we can convert it into a mixed fraction. 35 divided by 12. 12 2 is 24. 5 minus 4 is equal to 1. 3 minus 2 is equal to 1 is equal to 2 whole 11 by 12 is the answer. This is the first process. Then we can simply write like this. The LCM of 6 and 4 is 12. 6 and 4 is 2 3 is 6, 2 2 is 4. 2 into 3 into 2 is equal to 12 is the LCM, right? Okay, right here 12. Now what we have to do, 12 divided by 6 is equal to, right, 31 here. After division the result is 2, right? Right here put the minus sign here. Then 12 divided by 4 is equal to how much, 3. Okay, write 9. Then 12 divided by 4 is equal to
3. 31 into 2 is equal to 62 minus 9 into 3 equal to 27 by 12 is equal to 12 minus 7 is equal to 5. 5 minus 2 is equal to 3. 35 by 12. Again we can make it convert it from improper fraction to mixed fraction. How much it will be? 2 whole 11 by 12, राइट. हम अभी जान गए हम कैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, हाउ